Hello student, now today we will start poem Mystery of the Talking Fan. There is a ceiling fan in the room where you are sitting now. आप जहाँ पर बैठते हैं क्या वहाँ पे कोई सीलिंग फ़ैन है? Is the fan quite or noisy? क्या वो जो फ़ैन है वो आवाज़ करता है या चुपचाप चलता है? If it is noisy, so you may be sure it is distant relative of the talking fan. और अगर वो noisy है तो आप थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो उससे और आप उसको टॉकिंग फ़ैन कहोगे. Once there was a talking fan, electrical, his chatter. I couldn't quite hear what he said. And I hope it doesn't matter because one day somebody oiled and his little whirling motor and all the mystery was spoiled and he ran as still as water. Now in this poem, the poet explained that the poem opens with the personifications of the fan being given human attributes such as the ability to talk and chatters. Now here that the poet said that just like a human beings that the fan is also chatting and that the fan is talking. The poet calls the fan noise and electrical chatter. जो poet हैं वो fan को क्या बोल रहे हैं? Electrical chatter. Chatter means जो बोलते रहता है. The poet is unable to comprehend what exactly it means, and before the poet could succeed in decoding the mystery, somebody oiled its motor. Ever since it functioned in such a smooth manner that no noise could be heard, and the talking fan fell silent. Now, what the poet said here? The poet said, poet is unable to comprehend what exactly it mean, and before the poet could succeed in decoding the mystery, somebody oiled its motor. पोएट कहते हैं कि किसी ने आके और उस जो पहले जो आवाज़ कर रहा था फ़ैन, तो वो टॉकिंग फ़ैन कहा गया उसको, और किसी ने आके उसमें ऑयल डाला जिसके कारण उसकी जो आवाज़ है वो क्या हो गई है, उसकी मोटर में ऑयल डालने के कारण बंद हो गई है. आवर सिंस इट फंक्शन इन सच ए स्मूथ मैनर, और वो बिल्कुल स्मूथ मैनर में काम कर रहा है. दैट नो नॉइज कुड बी हर्ड, अब कोई भी आवाज़ उसमें नहीं आ रही है. एंड द टॉकिंग फ़ैन फेल साइलेंट, अब जो टॉकिंग फ़ैन है वो बिल्कुल शांत है.